हेलो फनिक्सीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फॉर टुडेज वीडियो मैं आपको दिखाने वाली हूँ हाउ यू कैन मेक अ वेरी क्यूट बेबी डॉल एट होम। सो यहाँ पे मैंने क्राफ्ट वायर लिया है एज यूजुअल एंड देन यहाँ पे मैंने कुछ फोम शीट्स लिए इनटू अ स्किन कलर एंड सो यहाँ पे मैं स्टार्ट करूँगी इस क्राफ्ट वायर को कम्प्लीटली इस तरह से कवर करने की। एंड सो गाइज, जैसा कि आप देख रहे हो हाउ आई एम कवरिंग दिस एंड द सेम वे आपको भी ऐसे ही करना है। सो वंस इट्स डन, एज यू कैन सी ये कुछ इस तरह से दिखेगा एंड देन आई जस्ट रिपीट द सेम थिंग फॉर द हैंड्स एज वेल। सो गाइज, नाउ यहाँ पे मैंने सेम फोम शीट ली है एंड आई जस्ट मेक दिस हैंड काइंड ऑफ शेप ओवर हियर सो दैट ये पाम मैं उस तरह से हैंड के एंड्स पे लगा सकती हूँ। एंड सो आई एम डूइंग दैट। सो जस्ट आफ्टर आई एम डन डूइंग दिस, एज यू कैन सी मैंने यहाँ पे इस तरह से एक pretty white lacy fabric लिया है एंड यहाँ पे I'll start making her dress. So I'll just take a little bit cotton and put it inside. So as you can see this is what it looks right now. यहाँ पे मैंने स्टिक कर दिया है इस तरह से उस क्राफ्ट वायर को जिसको मैंने फोम शीट से कवर किया था and then I'll just use some threads and just tie it around. So इस तरह से as you can see this is how it looks right now. Now यहाँ पे मैंने एक white mesh fabric लिया है for the dress and over here I'll just start making the ruffle. So यहाँ पे guys इस तरह से I'll just put ruffle over here and make the skirt. So guys, once that is done, as you can see यहाँ पे मैंने एक और fabric लिया है into the white color but it's kind of a mesh and design fabric. And now what I'll do is that यहाँ पे मैं इस तरह से इसको roll out करूँगी. Then I'll put this one craft wire over here, so this will be the sleeves as well as the hand. Now guys, I'll stick these two on the sides. So as you can see the doll body is kind of ready right now. Now what I'll do is that I'll stick the palms on each of the sides. And यहाँ पे स्टिक करने के बाद आप देख सकते हो बिकॉज मैंने उसमें क्राफ्ट वायर डाला है सो हैंड्स एंड लेग्स बहुत अच्छे से मूव कर रहे हैं। देन यहाँ पे मैं स्टार्ट कर रही हूँ हेड बनाना डॉल का एंड इसको भी इस तरह से आई जस्ट पुट सम कॉटन इनसाइड एंड जस्ट मेक अ सर्कल, अ बॉल आउट ऑफ इट बेसिकली। So guys, ये है डॉल का हेड एंड I'll just make the eyes and the nose and all. So guys, यहाँ पे मेरा कैमरा लिटिल आउट ऑफ फोकस हो गया था बट आई जस्ट मेड द फेस एंड देन आई एम स्टार्टिंग टू मेक द हेयर्स फॉर द डॉल. सो एज यू कैन सी यहाँ पे इस तरह से मैंने वूल ले लिया है, जस्ट अ डार्क ब्राउन वूल एंड आई स्टार्ट मेकिंग द हेयर्स. सो ये मैंने बहुत बार अपनी वीडियोज़ में ऑलरेडी शो किया है. इफ़ यू डोंट नो हाउ टू मेक दिस आप मेरी पुरानी वीडियोज़ जाके चेकआउट कर सकते हो. Once that is done, I'm making a bun over here for the doll. तो यहाँ पे मैं इस तरीके से एक bun बनाऊंगी and I'll just stick it on top of the head. So guys, now after doing that, I'm taking a white wool as well and then just यहाँ पे मैं same procedure करूँगी and I'll make a ball out of it as well, this way. And as you can see it's kind of a flower right now. So guys, now यहाँ पे मैं इस तरह से इसको ends पे stick करूँगी so that this will be a very nice furry shoes for the doll.
नाउ गाइस यहाँ पे मैं थोड़ा सा मेकअप इसको अप्लाई करूँगी एंड मेक सम ब्लश। नाउ एज यू कैन सी ये डॉल कितने अच्छे से मूव कर रही है गाइस। इट्स वेरी क्यूट एज यू कैन सी। हेलो एवरीवन, मैं हूँ एक फेरी और आज मैं आप लोगों को अपनी न्यू पेट से मिलवाना चाहती हूँ। तो कौन कौन एक्साइटेड है उससे मिलने के लिए? ओह, there he is. Hello chicken. Say hi to everyone. और मेरी तरह डांस करके दिखाओ सबको ऐसे। चलो भी, अब शर्मा मत। कोई बात नहीं, किसी और दिन, ठीक है? So guys, if you like this video, please make sure you get a big fat thumbs up. Till next time, bye bye.